system, we have a reference input that we denoted by R of t, and we have a control output that we denoted by C of t. A control system can be categorized mathematically by transfer function. We can represent the control system by using transfer function method, or we can represent the control system or any system with the help of a state model. So you all know transfer function is nothing but it is the Laplace transform of output variable to the Laplace transform of input variable with all the initial condition is assumed to be 0. While defining the transfer function or by defining the control system using transfer function method, we have to consider the initial condition to be 0. So you all know C of t, the transfer function of C of t becomes C of s, whereas the transfer function of R of t is R of s. That is C of s by R of s is transfer function. Then, in brief, classification of control system. The control systems may be classified in a number of ways depending on the purpose of classification. Depending on the presence of human beings as a part of the control system, closed systems may be classified as a manually controlled system or it is automatic control system. Similarly, depending on the presence of the feedback, control system may be classified as open loop control system. If there is no feedback to the input, the system is called open loop. Whereas if the system is feedback to the input, it is called a closed loop system, or we can say a feedback control system. Then we have to see the open loop system. What is open loop system? Those systems in which the output has no effect on the control action are called open loop control systems. In other words, in an open loop control system, the output is neither measured nor fed back for comparison with the input, or the output is independent of the input. One practical example for an open loop control system is a washing machine, because in a soaking, washing and drying in the washer operate on a time basis. The machine does not measure the output signal. And what is the output of the washing machine? The output of the washing machine should be the cleanliness of the clothes. The washing machine is not measure the cleanliness of the clothes. That's why we call it is the example of open loop system. If the output is the time of soaking or washing and rinsing the water in the washing machine, in that case the system may be called as closed loop system. Okay. A feedback control system, that is also called a control system, a system that maintains a prescribed relationship between the output and the reference input by comparing them and using the difference as a means of control is called a feedback control system. This types of system is same as the closed loop control system. We can call feedback control system as a closed loop system. Okay. A closed loop system is one in which the control action depends on the output, whereas in open loop system the control action is independent of the output. Okay. In closed loop system, the control action depends on the output in addition to the input system. In such a system, the output is fed back and compared with the input as indicated in the following figure. Okay. You can see in a closed loop system, the actuating error signal, you can see here the summer, which may be the output signal itself or a function of the output signal, and its derivative or its integral is fed to the controller so as to reduce the error and bring the output of the system to a desired value. The term closed loop control is always implies to the use of feedback control action in order to reduce system error. Okay. The fundamental difference between
The open loop and closed loop control system is that of feedback path action or is that of feedback action. In case of open loop system, the feedback is absent, while in case of closed loop system, the feedback action is present. There are various advantages and disadvantages of open loop system and closed loop system. I have written only one. An advantage of the closed loop control system is the fact that with the use of feedback makes the system responsively relatively insensitive to external disturbance and internal variation in system parameters. Therefore, it is possible to use relatively inaccurate and inexpensive. This is important line. For a closed loop system, we can use inaccurate and inexpensive components to obtain the accurate control of a given plant. Whereas in open loop system, since in open loop system we do not have any control power, in that case we have to use accurate, and if the component is accurate, that must be expensive. Okay, so this possibility is impossible in open loop system, and there are various advantages of closed loop system. It is highly accurate. The closed loop control system is less sensitive to parameter variations. The closed loop system is faster in action, or it improves the transient response of the system. It also reduces the noise or disturbance signal. Whereas there are some demerits or lacuna of closed loop system. The number one is the use of feedback elements, and because with the inclusion of feedback elements, this increases the complexity of the system. It also reduces the overall gain of the system, and because of this, there is a possibility of instability in the closed loop system. So this is a brief of about a closed loop system and open loop system. Now we have to see what is transfer function. I already defined what is the transfer function of a linear system. The transfer function of the linear system is defined, or it may be defined as the ratio of the Laplace transform of the output variable to the Laplace transform of the input variable, and of course with all the initial condition assumed to be zero. Again repeated while defining the control system with the help of transfer function method, we do not consider the initial conditions, whereas in state variable method, in that case we have to consider the initial condition. Okay. The transfer function of a system or element represents the relationship, and that relationship describes the dynamics of the system under consideration. You all know there are two, depending on the types of feedback. Here we consider two types of control system. Open loop control system, you can see open loop control system with output is denoted as C of S and input is R of S. The transfer function of this open loop control system is denoted as C of S by R of S, ratio of Laplace transform of output variable by the input variable to G of S, and which is equals to C of S by R of S is equals to G of S. Similarly, for closed loop system, this is a simple block diagram of closed loop system. In this we consider G of S. We represent the closed loop control system by a simple block diagram as you see on your screen. In the figure, R of S is the Laplace transform of input signal, C of S is the Laplace transform of output variable, this E of t, the Laplace transform of E of t is E of S, and E of t or E of S is the Laplace transform of output variable, or E of S is the Laplace transform of error signal. It is the error signal. It is the error signal, that is the difference between input and output. This H of S is the feedback, transfer function of feedback, and G of S is the forward part transfer function, and H of S
is feedback path transfer function. And you all know, if error signal is 0, if there is no error in the system, it means output is controlled. And if error signal is not 0, if the value of E of f is not 0 or E of t is not 0, in that case output is not controlled. You all know for positive feedback error signal, if the feedback is positive in the summer, the sign is positive. In that case, the error signal is R of t plus C of t or R of s plus C of s. And if the feedback is negative, in that case, the error signal is difference between R of s and minus C of s. The purpose of this feedback is to reduce the error between the reference input and your system output. Then you all know for positive feedback, if the feedback is positive, in that case our closed loop transfer function, if the feedback is unity, then it is C of s by R of s is G of s by 1 minus GSHS. If the feedback is negative, then the denominator of closed loop transfer function is negative. Okay, you can see on your screen. If the feedback is negative, then it is the transfer function is denoted by G of s by 1 plus GSHS, where you all know G of s is nothing but the transfer function of the forward path and H of s is the transfer function of the feedback path, or G of s is the forward path transfer function and H of s is the feedback path transfer function or feedback path element. So this is the brief about the transfer function. For control system, you should know the closed loop transfer function for positive feedback as well as negative feedback. And you also know if the feedback H of s is 1, if H of s is 1, then we can say that the feedback is unity feedback. Okay, and if I compare both the open loop transfer function and closed loop transfer function. In open loop system, the transfer function is C of s by R of s is G of s. Whereas for closed loop system, the transfer function is G of s by 1 plus GSHS. It indicates that this indicates that the overall gain of a feedback control system reduces. In closed loop system, the gain is reduces as compared to open loop system, because open loop system is only G of s, whereas closed loop system is G of s by 1 plus GSHS. Hence, we can say that for closed loop control system, the feedback or the gain of the system reduces. This is the one conclusion of this open loop and closed loop system. You can see, suppose a system, a simple RC network is given, and if someone or the question is asked, find the transfer function of the given RC network. So this is one of the method to find the transfer function by applying the Kirchhoff's law. In this, for this example, I apply the transfer function of the network shown in figure, and what we have to find? We have to find the transfer function. And you know the transfer here, V1 is the input and V2 is the output. The transfer function of V2 is V2 of S and the transfer function of V1 is V1 of S. And what we have to find? We have to find the relation between input and output. And for any electrical network, if you want to find the relationship between input and output, we have to apply the Kirchhoff's law. So here I apply the Kirchhoff's voltage law, which gives or which yields when we apply the Kirchhoff's law. You all know Kirchhoff's voltage law. This is sum of the voltage rises is equals to sum of the voltage drop. So here voltage is rise, V1 is the voltage rise is equals to drop. So since there are two elements R and C. So it is R into I of S. You can see the I of S is the current in this loop. So it is R into I of S plus 1 by C of S into I of S. So here I of S I have taken as common. So first equation is V1 of S is R plus 1 by C of S into I of S. Okay. Similarly for output,
output is nothing but the output is the voltage across this capacitor, and across the capacitor the voltage equation is I into 1 by C of L. You can see, suppose this is our equation 1, and this is suppose equation 2, and what is our aim? Our aim is to find V2 of L by V1 of L. So now if I divide V2 of S by V1 of S, in that case the transfer function is 1 by RCS plus 1. So you should know when the order of the system is 1, it is called first order system. The denominator of this system is denoted the order of the system. If the order of the system is 1, it is called first order. If the order of the system is 2, it is called second order. And what is order of the system? Order of the system is nothing but the highest power of S in the denominator of the transfer function. In the denominator of the transfer function. Here denominator of the transfer function is 1. That's why it is first order system. And the order of the system is also depends on the how much number of energy storing elements are present in the electrical network. Here in this RC network, there is only one energy storing element, that is capacitor is only present. That's why the system is a first order system. So this is a simple example of RC network and how we find the transfer function by using Kirchhoff's voltage law. This is one of the method. You can find the transfer function for any electrical network by using Kirchhoff's voltage law or current law. If there are meshes, you can apply Kirchhoff's voltage law, and if there are number of nodes, you can apply KCL to find the transfer function. Now we come forward to see what is a block diagram. A control system may consist of a number of components, and to show the function performed by each component in control engineering, we commonly use a diagram, and that diagram is called a block diagram. The diagram is called a block diagram. A block diagram of a system is a pictorial representation of the function performed by each component and of the flow of signals. Such a diagram depicts the interrelationship that exists among the various components. Or we can represent a system by simply using the blocks of the component to represent the given control system. So you can see a figure shows an element of the block diagram. The arrow is important. Here there are two arrows. The arrow head pointing towards the block. That arrow bit pointed towards the block is called the input, and the arrow head or pointed away from the block represent the output. If there are number of blocks in the control system, so how we identify the input to the block and output of the block? By the direction of the arrow or by pointer of the arrow. If the pointer is towards the block, it is input, and if the pointer is away from the block or outward to the block, it is called the output. So you can see here R of t is input and C of t is your output. This is a simple closed loop control system block diagram. I already told you, and the transfer function of this is a simple closed loop transfer function with negative feedback is G of S. The transfer function that is C of S by R of S is G of S by 1 plus GS HS. You all know this transfer function. We do not require to derive here. Okay, so this is the block diagram. Okay, for block diagram reduction. Okay, now we started the block diagram reduction technique. This is one of the method to find with the help of block diagram reduction technique. You can find the transfer function of the system, and that method is called block diagram reduction technique method. Block diagram reduction technique method or block diagram reduction technique. So if there are a simple closed loop system, we can represent this block by using a block G of S by 1 plus G. So this is the simple rules
And for block diagram reduction technique, there are some rules that we have to follow while reducing the number of blocks. What is our aim? Our aim to simplify the given blocks. If there are number of blocks, if there are number of summers, number of takeoff point or number of pickoff point, we have to reduce or we have to simplifying the given system into a single block with output C of S and input R of S. So there are various rules. So these rules you can see on your screen. Number one, like in case of star delta, what is our aim? Our aim is to find a single resistance or single component. Same principle we can apply here. If there are more than one blocks are in series or they are called cascade. If the number of blocks are in cascade, so the resultant or the equivalent block diagram is the multiplication. वहाँ पे अगर 3 ब्लॉक है, suppose G1, G2, G3, अब हमको 3 blocks को we have to convert into single block. तो single block का product क्या होगा? We have to product of all the gain of that block. That is G1, G2, G3 and so on. With of course the input and output must not be changed. You can see on your screen. The output is X1 and this is X3. The output of X of T block is X1 into G1 of S, whereas X3 is the G2 X2 of S. And I substitute the value, we can get this value G1 G2 or it is G2 G1. Means the conclusion of this first rule is if there are more than one blocks in series or in cascade, the resultant is the multiplication of all the blocks. Now, number two, if there is a moving a summing point or beyond a block, suppose this is the summing point or summer you can see, and I have to move this summer after this block G3, after this block G3. So what is the input to this block? In the original diagram, the input to this block is X1 plus minus X2. Okay, अगर मैं same यहाँ पे इसको represent करता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? It is if this is not G here, that is X1 G plus minus X2 होता था. So for that we have to multiply an additional block. You have to connect in series with the X2 to get the original output. The original output of this block is X1 G plus minus X2 G. In that case also it is X1 G plus minus X2G. So while deriving or while simplifying the block diagram, your output should not be changed. The original output and your equivalent output, that must be same. Okay, so you can move a summing point before a block or after a block, that is behind a block. Similarly, this is a pick-off point. Here the original diagram, in the original diagram, the output X2 is X1 of G. X1 of G. So here also for original block diagram, the output should be same. Here also X2 is X1 of G. Here also X2 is X1 of G. So when we have to transfer a block diagram after a block, we have to multiply by G. When we have to move pick-off point before a block, in that case also we have to take another block G. Similarly, moving a pick-off point behind a block or after a block, this you can see here. Here in original diagram, the output of X of 2 is X1G, and this is X1 is X1. Here also X2 is X1G and X1 is equal to G into G. G by G is cancelled, so you will get X1 is equals to X1. So in that case also we have to use a separate block, and then in that case is 1 by G1, 1 by G. We can also move a block summer or summing point before a block. In that case also it is 1 by G. You can see on your screen. So these rules are very important for a reduction of a block diagram, to find a transfer function by using block diagram reduction technique. You can see eliminating a feedback. You all know if there is a feedback system or there is a closed loop system, the output is G by 1 plus minus GH. With of course output is X of T and input is X1. So this is all the rules that you have to follow for a block diagram reduction technique. Okay.
But my suggestion, if there is not clearly asked, और गेट में तो ऐसा कोई बोलते नहीं है कि आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करना है कि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक यूज करना है. तो इन दैट केस आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक अवॉइड करो, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू सिग्नल फ्लो ग्राफ. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग. So I have taken a simple example. You can see on your block diagram. For a given block diagram, suppose we have to find the transfer function, or we have to reduce a given block into a single block with output C of S and input R of S. You can see, and there are number of ways to find a block, number of ways to find a transfer function or to find a single block by using reduction technique. So here you can see in the screen, on your screen, the output is C of S, input is R of S, and this block, this simple block, I have taken a simple problem. If this pickoff point is not in between G3 and G4, then in that case I can solve this problem. I can solve this block diagram simply by applying two blocks in cascade and eliminating a feedback loop. So what is my aim? My aim is to shift this pickoff point. I have to shift this pickoff point from this point to after a block G4, so that these two blocks are in series. Okay. In this figure you can see. In the next figure, in figure A, you can see I shift the pickoff point or pickoff point after the block. जब भी आप लोग pickoff point और pickoff point को after the block shift करते हो, तो it should be divided by that block. तो यहाँ पे भी shift किया, तो G4 के बाद shift किया था, तो divide by G4 हो गया, तो H2 by G4 हो गया. ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो ये H2 by G4 हो गया. ये बात क्लियर हो गया. अब G3 और G4 के बीच में कोई भी पिक ऑफ पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, तो इन दैट केस बहुत ही सिंपल हो गया. ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया फीडबैक. तो हमको मालूम है जब दो ब्लॉक सीरीज में होते हैं, कैस्केड में होते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. और फीडबैक है तो G3 G4 बाय, और फीडबैक यहाँ पे we have by solving the block diagram reduction technique you must check whether the feedback is positive or feedback is negative. So here G3 G4 divided by, since feedback is negative, in that case denominator is 1 minus G3 G4 H1, 1 minus G3 G4 H1. Now our block diagram is simple. ये वाला फीडबैक पाथ हट गया, इसके बदले में क्या आ गया, G3 G4 by 1 minus G3 G4 H1. You can see नेक्स्ट केस में ये दोनों ब्लॉक्स, नाउ ये दोनों ब्लॉक सीरीज में है और ये हो गया फीडबैक. Two blocks in series and this is the feedback. Again we have to apply the rule, two blocks in cascade and eliminating a feedback loop. तो फॉरवर्ड पाथ हो गया G2 G3 G4 1 minus G3 G4 H1 डिवाइड बाय G2 G3 G4 1 plus G2 G3 G4 1 minus G3 G4 H1 multiply by H2 G4. So you can see, so after simplification you got a simple block G2 G3 G4 1 minus G3 G4 H1 plus G2 G3 G2. ठीक है, ये देखो ये फीडबैक में, ये फीडबैक नेगेटिव है तो ये अंदर पॉजिटिव है. ये फीडबैक नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव था, इसलिए नेगेटिव है. Okay. And after the last is two blocks in series. When two blocks in series, it is G1, G2, G3, G4, and feedback is 1 plus G1, G2, G3, G4 into S3. So you will get this answer. This is the block diagram reduction technique. C of S by R of S is G1, G2, G3, G4 by 1 minus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4, H2. You can check your answer by saying the question. The closed loop transfer function, the transfer function of the closed loop system, the numerator represent the forward path gain
The numerator represent the forward path gain and denominator represent the feedback. So in this figure, you can see, and what is forward path? Forward path is we have to travel from input to the output in a forward direction. So you can see in this block diagram, there is only one forward path: G1, G2, G3, G4. So you can see your answer: G1, G2, G3, G4. There is only one forward path there. That's why in the denominator, in the numerator, there is only G1, G2, G3. G4, whereas in this feedback, in denominator there are feedback. Number one, G3, G4, H1. You can see G3, G4, H1, and this feedback is positive. That's why it is negative. Okay, of course, one minus or one plus. This is first feedback. Second feedback, you can see this second feedback. This is second feedback. G2, G3, H2. Here it is a negative. So you can see this positive. G2, G3, H2. G2, G3, H2. And the third feedback is S3. G1, G2, G3, G4, S3. Of course, with negative. If the feedback is negative, the answer is positive. So it is G1, G2, G3, G4, S3. So you can find your answer, or if there is an MCQ question in any exam or competitive exam or GATE exam, so you without solving the actual, you can find the answer of the objective answer you can find, or you can get the idea which answer is right or wrong. Okay, so this is a brief idea of block diagram reduction technique. In block diagram reduction technique, by using block diagram reduction technique, we have to use the sixth of the rule that I have shown you, or I have given you, by eliminating a feedback, or combining block in series, or combining block in cascade. Okay, so there are a number of ways to find the transfer function. The third method, the first method is by applying KCL, KVL by electrical to electrical network. Second method is to apply a reduction technique for a block representation. The third is for signal flow graph. The signal flow graph technique. The signal flow graph technique. This is a signal flow graph technique. So in signal flow graph techniques, there are number of methods. So before that, we have to see some terminology that are used in a signal flow graph. You know, node is nothing but it represents a system variable and is equal to sum of the incoming signals. Okay, or node or junction point, you all know what is node. A node is nothing but a junction point which represents a system variable which is equal to the sum of all the incoming signal to the node. Outgoing signals from the node do not affect the value of the node variable. So that is the input and branch. A signal travels along a branch, you all know, from one node to another in a direction indicated by branch arrow, and in this process get multiplied by the gain of the node. So this is all a branch. Branch is a line of segment of the signal flow graph, or if I have to join two nodes, in that case I have to use a branch. Then input node, it is a node. Input is it is very important in signal flow graph to identify the input and output node. Input node or source. Okay, so input node with only outgoing branches. It is the node with only outgoing branches. It does not have any incoming branches. For example, you can see on your screen here I1 is the input node because there is no output or there is no incoming to the X1. There is only outgoing from the X1. सिर्फ outgoing जो node से सिर्फ outgoing signal रहते हैं, that node is called input node. Okay, so you must identify the input
And output node of the system. Again, I am telling input node is that node with have only outgoing branches, or that node with only outgoing signal. So in the signal in this block diagram reduction in SFG technique or in the PPT shown, I1 is your input because it has only outgoing nodes. यहाँ से सिर्फ outgoing जा रहा है इधर नहीं. X2 इसको I2 को क्यों नहीं बोल रहे हैं? I2 को इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि I2 के बाद यहाँ से इनकमिंग आ रहा है और यहाँ से भी इनकमिंग. दो यहाँ से आउटपुट है लेकिन यहाँ से दो इनकम. That's why it is not a I2 is not a input. Similarly, output node is that node with only incoming branches. Output से कोई भी सिर्फ and output is a node with only incoming branches. Only incoming. You can see here I5 or I1, I6. Sorry, this node only incoming, no outgoing. It does not have any outgoing branches. Output does not have any outgoing branches. Any node can be converted into input node by connecting an additional branch with unit transmittance state. We can make it output by take a gain 1. Okay, mixed node, that is for example I2, I3, I4, I5. These are all mixed node. A mixed node is a node that has both incoming and outgoing branches. Then path. Path means रास्ता, जहाँ से आपका वेरिएबल चल रहा है. A path is nothing but it's a traversal of connected branches in the direction of the branch arrows, such that no node is traversed more than once. That is your path. Then forward path, that is we have to move in forward direction. It is a path from input node to the output node. Okay, in signal flow graph we have to find the number of forwards. मुझे input से output जाना है in forward direction, that is called a forward path. A forward is a path that starts at an input node and terminates at an output node. And along with no node traverse, no एक से ज़्यादा बार नहीं. सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जाना है, कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ. देन लूप इज अ लूप, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं वापस आ रहे हैं. A loop is a path which originates and terminates at the same node and along which no node is traversed more than once. Okay, this is a node for loop. That is called a loop. Feed loop. It is a path which originates and terminates at the same node. इसमें पहला जहाँ से start का, for example, this is a loop. I2, I3, वापस I2. Okay. Then non-touching loops, that loops उसमें जो common जो एक दूसरे को touch नहीं हो रहे. For example, ये और ये loop एक दूसरे को touch हो रहे हैं, but ये और ये loop touch नहीं हो रहे हैं. That is, if they do not have any common nodes, in that case we called as a non-touching loop. Non-touching loops are that node which do not possess any common node. Then path node, path gain, the product of the branch gains encountered in traversing a path is called a path gain. Similarly, we have to define a forward path gain. The product of the branch gain encountered in traversing a forward path is called the forward path gain. Similarly, loop gain. This is a loop gain. Loop ka gain A2, A23 is the product. The product of the branch gain encountered in traversing the loop is called the loop gain. Similarly, a self loop. This is a self loop. A self loop is a loop consisting of a single branch. This is called a. So this is nothing but a simple terminology or simple definitions of the parameters or the terminology that we have to use for a single flow graph. Then this is a construction. Then I take a simple problem for this signal flow graph. So construction of signal flow graph. So there are various methods. Number one, there are here we can find the signal flow graph from the block diagram. From block diagram, we can find the signal flow graph, and by applying the signal flow graph technique, we find the transfer. If there are different algebraic equations are given, from algebraic equation we can find the signal flow graph, and after that we can find the transfer function. Similarly, if there is an electrical network, by electrical network, we have to convert that electrical network into a block diagram, and after that we can find the signal flow graph. Okay, there are various methods to find the transfer function using signal flow graph technique.
So here I take a simple example. Here there are four simple equations are given, and what is our aim? Our aim is to, for the given equation, find the transfer function using the signal flow graph technique, or for obtain the transfer function for the system which is defined as here. There are four equations are given: x2, x3, x4, x5. You all know left hand indicates output and right hand indicates input. So for example, for this node, so what are the different nodes? There are 5 nodes: x1, x2, x3, x4, x5. You can see यहाँ पे represent किया था x1 is the input variable and x5 is the output variable. So in equation 1, our first step is to find the nodes. तो हमने step 1 में nodes find कर लिया. कितने nodes थे? There are total 5 nodes: x1, x2, x3, x4, x5. And यहाँ पे define नहीं किया था कि आपका x1 node है, input node था, और x5 output node था. Otherwise we can find which node is input and which node is output. So here in step 1 there are 5 nodes: x1, x2, x3, x4, x5. Now by using this equation 2, we have to draw the signal flow graph. So for this, by using this equation or by using equation 1, we have to draw the signal flow graph. तो signal equation 1 में x2 हो गया output, x2 output node हो गया, और वहाँ और x2 के पास बाकी node से input आ रहा है. तो x1 से कितना input आ रहा है? x1 से input आ रहा है gain A12. You can see in x2 के बाद x1 से input आ रहा है A12. x2 से कितना? सेल्फ लूप है. x2 से x2 के पास ही आ रहा है with gain A22. Okay, you can see here. Similarly, x3 से कितना आ रहा है? x3 से A32 आ रहा है gain. You can see here. Direction of arrow is very important because direction indicates from where the input is coming or the output is going. From x4 से भी आ रहा है, x4 से आ रहा है, देखो x4 से आ रहा है with A42, और x5 से भी आ रहा है, x5 से A52. तो from by using equation 1 हम लोग ने डायग्राम B बना लिया. ओके. Similarly, by using equation 2, we can find C diagram. C के लिए क्या था? Equation 2 के लिए x3 output है और वहां से input एक ही नोड से आ रहा है, x2 से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओके with sign A23, with gain A23. You can see here A23. Similarly, by using equation 3 के लिए output हो गया x4, और equation 3 में दो जगह से input आ रहा है, x3 से input आ रहा है और x4 से input आ रहा है. You can see here. तो x4 output हो गया, x3 से input आ रहा था और x4 से input आ रहा था. तो ये हो गया हमारा फिगर D. Similarly for equation 4, x5 is output और वहां से दो जगह से input आ रहा था, x3 से और x4 से. ठीक है. तो x5 से x3 से input आ गया, x3 5, और x4 से input आ गया, x4 5. Okay. So by combining figure B2, 3 or B, C, D, E, this is the combined block diagram or combined signal flow graph. Figure F indicate combined signal flow graph. So there are 3-4 steps for signal to find the transfer function using signal flow graph. The first method is to, if there is no SFG is given, we have to draw the SFG. The first method is to draw the SFG. The first is your SFG. Okay. If SFG is not given, we have to find the SFG. तो यहाँ पे हम लोग ने SFG बना लिया. Step then after drawing the SFG or after construction of SFG, our main aim is to find the number of forward path. और forward path मतलब हमको input node से चलना है, output node पे पहुंचना है in the forward direction. So how many forward paths are there? Input node x1 से x2 गया, x2 से x1 से x2, x3, x4, x5. एक तो फॉरवर्ड पाथ सिंपल है, और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या? यू कैन सी
फिर से बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक से स्टार्ट करना है, इनपुट से स्टार्ट करना है, आउटपुट को पहुंचना है. देयर आर ओनली हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर? यू कैन सी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज x1, x2, x3, x4, x5. You can see. The second forward path is x1, x2, x3, x5. You can see second forward path x1, x2, x3 से direct jump मारा. देखिए x1, x2, x3 direct jump मारा x5. So there are two forward path. There are two forward path. Okay, x1, x2, x3, x4, x5. x1, x2, x3, x5 टू फॉरवर्ड पाथ. तो जब टू फॉरवर्ड पाथ है, एंड ऑफ कोर्स देयर गेन उनके गेन भी हमको कंसीडर करना है. तो गेन कैसे कंसीडर करना है? बाय मल्टीप्लाइंग. तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कैसा था? a12 a23 a34 a45 फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन a12 a52 सॉरी a12 a23 a35. okay, so we have to, and what is the Mason's gain formula or transfer function? it is summation of, कई बुक में pk डेल्टा के क्या डिवाइड बाय डेल्टा. ओके, तो न्यूमरेटर में सब फॉरवर्ड पाथ आएंगे और उसके गेन आएंगे और डिनोमिनेटर में लूप्स. तो अवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द नंबर ऑफ forward path, that is p1 delta 1, p2 delta 2. here there or m1 delta 1, m2 delta 2 or m3 delta. तो जितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे दो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है. तो x5 by x1 is equals to m1 delta 1 plus m2 delta 2 by delta. तो m1 तो मुझे पता हो गया, m2 पता चल गया. नाउ क्या फाइंड करना है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा. तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा ये मिलते हैं हमको लूप से, फीडबैक लूप और उसके गेन से. तो the first step is to find SFG, to draw the SFG. Second step is to find the number of forward path. ठीक है. Third step is to find the loop, individual loops और उसके gain. Loop मतलब क्या? मुझे वो जो नोड से चालू किया वही नोड पे आना है और कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए. सिर्फ पहला नोड रिपीट हो सकता है, यानी फर्स्ट नोड और लास्ट नोड. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये देखो, हम लोग डायरेक्ट अपने एसएफजी में ही देखते हैं. एक लूप ये था, देखो x2 से गया x3 पे गया, वापस x2 पे आया. दिस इज a1 लूप. दिस इज अगेन x2 से x2 एक लूप. दिस इज आल्सो लूप. दिस इज आल्सो लूप. दिस इज आल्सो लूप. ओके, दिस इज आल्सो लूप. तो देयर आर इन ऑल टोटल 6 लूप्स. यू कैन सी C D E F G H. The first is x2 x3 x2. You can see x3 x2 x3 with gain. सेकेंड लूप इज उसी का खुद का सेल्फ लूप. थर्ड x2 x3 x4 वापस सिंगल स्टॉप में वापस आना है, कोई भी लूप को रिपीट नहीं कर रहे हैं. ये देखो फोर्थ लूप खुद का लूप. फिफ्थ लूप x2 x3 x4 x7 रिटर्न. देन दिस लूप. देयर आर टोटल x2 से x3 गया, जंप मारा, वापस आया. ठीक है, तो देयर आर टोटल 6 लूप्स. There are total 6 loops. तो हमारा Mason's gain formula क्या हो गया? P1 मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, P2 मतलब सेकंड फॉरवर्ड पाथ. तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा. अब मुझे P1 पता चल गया, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, यानी उसका गेन पता है. P2 उसका गेन पता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. The step number 4 is to find the delta. Delta is very important. You can see delta. It is nothing but the determinant of the signal flow graph. Determinant of the signal flow graph. और ये सिंपल है बहुत फाइंड करने के लिए. इसका फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1. पहला हरदम 1 आएगा. You can, because ट्रांसफर फंक्शन क्या रहता है? g by 1 plus gh और g by 1 minus gh. तो 1 हरदम रहेगा डिनोमिनेटर में. तो डेल्टा इज 1 माइनस, पहला ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट में सम ऑफ लूप गेन ऑफ सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल
possible delta is 1 minus sum of individual loop gains। यहाँ पे टोटल कितने लूप्स थे? 6। तो इनका सम करना है मुझे। तो पहले ब्रैकेट में सबका सम A23 A32 A22 सब प्लस वाले ही है। तो A23 A32 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A34 प्लस सबको प्लस 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 करना है। तो 6 प्लस आ जाएंगे। यू कैन सी ऑन दिस। ठीक है। तो 1 माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। पहला ब्रैकेट सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 1 माइनस के बाद प्लस 1 माइनस हो गया। सेकेंड ब्रैकेट प्लस में क्या आएगा? सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। जो 2 लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं हो रहे उनका गेन प्रोडक्ट जनरली 1 माइनस पहले 2 ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। 3 नॉन टचिंग बहुत कम होता है। ठीक है। 1 हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। ओके। तो हियर तो हमारा 1 माइनस सबका गेन प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद अब देखेंगे कौन से लूप एक दूसरे को टच नहीं हो रहे। तो लूप एक दूसरे को टच नहीं हो रहे मतलब लूप दैट आर नॉट कॉमन टू ईच अदर, दैट द नोड दैट आर नॉट कॉमन टू ईच अदर। जैसे सब हम चेक करें, देयर आर टोटल 6 कॉम्बिनेशन है। देखो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे चेक करना है कि इसमें नॉन टचिंग कौन से है। तो अब मैं x2 और पहले लूप को दूसरे लूप से कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहला लूप दूसरे को टच हो रहा है बिकॉज x2 कॉमन है, तीसरों को टच हो रहा है। ठीक है। पहला लूप जिसका नोड है x2 x3 x2 वो चौथे को टच नहीं हो रहा है, यू कैन सी बिकॉज यहाँ पे नोड है x2 x3 x2 और यहाँ पे नोड है x4 x4। तो पहला लूप चौथे को टच नहीं हो रहा है मतलब एक नॉन टचिंग होगा। पहला लूप चौथे को इसको टच हो रहा है, इसको टच हो रहा है, एक हो गया। तो जो हो गया पहला और चौथा एक दूसरे को टच नहीं हो रहा तो उसका गेन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों के गेन को। तो A23 A32 A44 यू कैन सी L14 इंडिकेट्स कि पहला लूप चौथे को टच नहीं हो रहा था। A23 इसका गेन। ओके। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप। अब सेकंड को टच कर चेक करेंगे। सेकंड तो सेकंड इससे हो रहा है, सेकंड लूप थर्ड को चेक हो रहा, सेकंड लूप फोर्थ को नहीं हो रहा, सेकंड लूप फोर्थ को नहीं हो रहा, मतलब सेकंड लूप फिफ्थ को हो रहा, सिक्स्थ को हो रहा। इन दोनों का गेन प्रोडक्ट A22 A44 यू कैन सी A22 44। ठीक है। अब तीसरा लूप चौथे को टच हो रहा है x4 x4, तीसरा लूप पांचवे को टच हो रहा है x2 x2, तीसरा लूप छठवें को भी टच हो रहा है, ये टच हो रहा है। अब x4 x4 चौथा लूप पांचवे को टच हो रहा है लेकिन चौथा लूप छठवें को टच नहीं हो रहा है x4 x4। तो थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया ये देखो। तो इन दोनों का ठीक है 3 नॉन टचिंग लूप है ही नहीं, 2 ही नॉन टचिंग लूप है। ठीक है। तो ये वैल्यू 3। तो हमारा डेल्टा क्या है? डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस इन सबके प्लस और प्लस इन सबका। तो यू कैन सी अवर डेल्टा 1 माइनस उसका सबका, ये पहला ब्रैकेट 1 2 3 4 इन सबका 4 1 2 3 4 और इसका ये। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, ना हमने P1 या P2 या M1 M2 फाइंड कर, डेल्टा फाइंड कर लिया। अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड delta 1 and delta 2. And what is delta 1? Delta 1 is nothing but delta 1 is that part of a graph which is not touching the forward path. तो delta 1 और delta 2 फाइंड करने के लिए what we have to check? We have to check the forward path with loop. पहला फॉरवर्ड पाथ लेंगे, पहले फॉरवर्ड पाथ को पहले लूप से चेक करेंगे। x2 x2 है, पहला फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट को टच हो रहा है, पहला फॉरवर्ड पाथ सेकंड को टच हो रहा है, पहला फॉरवर्ड पाथ थर्ड को टच हो रहा है, पहला फॉरवर्ड पाथ सबको टच हो रहा है। सिंस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ टचेस ऑल द 6 लूप्स तो डेल्टा 1 की वैल्यू 1।
डेल्टा 1 की वैल्यू 1, ठीक है, तो डेल्टा 1 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर दैट पार्ट ऑफ अ ग्राफ व्हिच इज नॉट टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो पहला फॉरवर्ड पाथ सभी लूप को टच हो रहा है, इसे डेल्टा 1 की वैल्यू 1। अब सेकंड फॉरवर्ड पाथ चेक करेंगे, सेकंड फॉरवर्ड पाथ किसको टच नहीं हो रहा है? सेकंड फॉरवर्ड पाथ का नोड है x1 x2 x3 x5। सेकंड फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट को टच नहीं हो रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ सेकंड को टच नहीं हो रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ थर्ड को टच नहीं हो रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ फोर्थ लूप को टच हो रहा है। सॉरी गलत बोल, सेकंड फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट लूप को टच हो रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ सेकंड लूप को भी टच हो रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ थर्ड लूप को भी टच हो रहा है, ठीक है। फोर्थ लूप को टच नहीं हो रहा, तो फोर्थ लूप को टच नहीं हो रहा है सेकंड फॉरवर्ड पाथ, तो इन दैट केस अवर डेल्टा 2 इज 1 माइनस कौन से लूप को टच नहीं हो रहा? A44 को टच नहीं हो रहा, तो इट इज 1 माइनस A44। और सेकंड फॉरवर्ड पाथ इसको भी टच हो रहा है और इसको भी टच हो रहा था, एक लूप को टच नहीं हो रहा था, तो हमारा डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस A44। तो यू कैन सी द आंसर 1 minus A44. This is P2 or M2 and this is your delta 2. This means the second forward path था, ये लूप को टच नहीं हो रहा था, इसलिए 1 तो रह गई, 1 माइनस। ओके, तो दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्रीफ आइडिया ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगर पढ़ाते गए तो पूरा टाइम इसमें निकल जाएगा। दिस इज द ब्रीफ आइडिया ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। Now we have to see the next topic is about the transient and steady state analysis. You all know what is transient analysis, or we can say it is a transient response. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और इसको टाइम रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज टाइम रिस्पॉन्स? टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इट इज नथिंग बट द टाइम रिस्पॉन्स इज द वेरिएशन ऑफ आउटपुट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ टाइम रिस्पॉन्स। Okay, the time response is the variation of output variable with respect to time. Okay, the time response of control system can be divided into two parts. You all know, एक रहता है transient response and number 2 is steady state response. Okay, the transient response is based on the T and steady state response is steady state. Okay, and what is the transient response? Transient response is nothing but it is a part of the response that goes to zero. That goes to zero as time becomes large or after certain time interval. Time response हमारा जो transient response है it becomes zero. So if suppose C of T is the output और TR को मैं transient से response से कर रहा हूँ, तो when time becomes large, not infinity, when time becomes large, in that case our transient becomes zero. Okay, so what is transient response? Transient response is a part of the response that goes to zero as time becomes large. That is C of T is equals to zero when T is large. The steady state response, okay, the steady state response is the mixed fixed response. The steady state response is the fixed response. That is when the time reaches infinity, the steady state response मतलब output मिल गया मुझको, it means I achieved the steady state. Okay, the time interval after which the system responds taking the instant of application of excited reference, the total time that it takes to achieve the output for the first time, these all are time response definition. Whether or not the output shoots behind the desired value and how much, these all are the time response. The output, the time that it takes to settle to the final value. This is the steady state. You can see here. You can see. Suppose I have given a step input. You can see the step input. एक unity step input. Unit step input दिया है, and this is the output.
ओके, तो जब तक ये बढ़ते जा रहा है दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिएंट। आफ्टर दैट इट इज अ स्टेट हो गया है ना, नियर टू यूनिटी आ गया, स्टेडी स्टेट हो गया, तो इट इज अ स्टेडी स्टेट। तो दिस इज अ ट्रांजिएंट, दिस इज अ ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड दिस इज अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो मैंने बता चुका हूं व्हाट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और दैट आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो स्टेट और फोर्स्ड और फिक्स्ड और फाइनल और पर्टिकुलर। द पार्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स that remains even after the transient have died. Steady आपको जब भी मिलेगा जब transient चला जाएगा, transient चला जाएगा। Okay, the part of a response that remains even after the transients have died out is said to be steady state response. From steady state response we get the following response: the time that output takes to reach the steady state, ये मिल जाएगा आपको, whether or not any error exists between the desired and the, for example यहाँ पे मुझे there is error, though it is only 2% error, लेकिन this is error, whether this error is constant, zero or infinite we can find। okay, और the total response क्या रहता है, if C of E is the output, the total response of a system is the sum of the transient response and the steady state response, you can see, and this figure shows the transient and steady state response along with steady। So this is our output, this is my output। output मतलब it is the combination of transient and steady state। if the system is varied with the time it is transient, and if it is constant this is called a steady state। तो transient में दो time response मतलब दो, एक है transient और एक है steady state। you can see there are various test signals, that we have to give to the control system to get the output। you can see the various there are unit impulse, you can see the unit impulse that will be denoted by d or del t, उसका Laplace 1 रहेगा। unit step, this is the figure for unit step। unit step क्या रहता है, unit step response, what is unit step, the response at unity step, okay, at time is equals to 0 we will get the input, this is the unit step। this is unit step को position step भी बोल सकते हो। ramp, this is ramp और velocity input। time response format is t u of t, उसका Laplace 1 by s square, unit parabolic t square by 2 u of t और उसका Laplace 1 by s cube। अगर s से मल्टीप्लाई, तो सिस्टम इज मल्टीप्लाई बाय s, इट इज डिफरेंशिएटर। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो 1 by s से तो इंटीग्रेटर बन जाएगा। तो यू कैन सी ऑल दिस टेस्ट सिग्नल्स, all these test signals that are used for the to get the output from the control system, you can see here। so first suppose I have taken a simple suppose I have to drive a unit, I have taken a simple first order system, एक simple first order system लिया, वन उसका 1 by ts, so for g of s 1 by ts ले लिया, feedback is unity और इसको solve कर लिया इसको, तो output is c of s, input is r of s 1 by t of s, तो c of s by r of s is 1 by t of s। ओके, और ये सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टम को मैंने क्या दिया, मैंने यूनिट स्टेप इनपुट दिया। तो फॉर यूनिट स्टेप यू ऑल नो आउटपुट चाहिए मुझे, ये सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन, ये जो सिस्टम था उसको मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब सी ऑफ एस, और उसका लैप्लास इनवर्स लूंगा तो सी ऑफ टी, तो सी आर ऑफ एस को राइट हैंड में ले लिया, और फॉर यूनिट स्टेप द लैप्लास इज 1 बाय एस, तो 1 बाय टी ऑफ एस प्लस 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एस किया बाय यूजिंग अ ट्रांसफर लैप्लास पार्शियल फंक्शन मेथड। तो पार्शियल फंक्शन मेथड से मैंने k1 और k2 की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो k1 की एक वैल्यू आएगी 1 और k2 की वैल्यू आएगी -1। तो बाय अप्लाइंग द पार्शियल फंक्शन मेथड तो मैंने k1 और k2 की वैल्यू फाइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने इनवर्स लैप्लास बना लिया। तो 1 बाय s का इनवर्स लैप्लास इज 1 और 1 बाय s प्लस 1 बाय t का इनवर्स लैप्लास आ गया e टू द पावर माइनस t बाय t। तो दिस इज द रिस्पांस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर? बिकॉज the denominator of the closed loop transfer function, the highest power of s in the denominator of closed loop transfer function is 1, that's why it is called first order system। तो देखो मैंने इनपुट दिया था 1 स्टेप इनपुट दिया था, तो उसका आउटपुट क्या आ गया, तो दिस इज द स्टेडी स्टेट। इसमें दो, ये स्टेडी स्टेट है और ये है ट्रांजिएंट। तो ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट दिस इज ट्रांजिएंट,
दिस इज अप टू दिस इज द ट्रांजिएंट, और उसके बाद क्या हो गया, सिस्टम 1 हो गया. तो दिस इज योर स्टेडी स्टेट, दिस इज योर ट्रांजिएंट. So this is the transient response of a first order or time response of first order system to a unit step input. Okay. So you can see, and there is an error, of course. So you can see here the response of first order system to a unit step. Similarly, we can find the response of first order system to, suppose अगर मैंने यूनिट स्टेप की जगह पे मैंने यूनिट रैम दिया था. यूनिट रैम, you all know for unit रैम r of t is t times u of t, और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1 by s square. ठीक है, 1 by s square. अगेन वी हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, k1 k2 k3. तो ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफर 1 by s square का t, t by s का t, t square by t square, t into e to the power 10 t by t. So this is the RAM or this is the output, और ये दोनों के बीच का है steady state. This is called a steady state. So here there is an error between the input and the output. So what is error signal? You can see there is an error. As t approaches infinity, the error signal E of t approaches t or the t unit RAM input and the system output. You can see on your figure the error in following the unit error input is signal to, here the error is t. Error का formula you all know, the formula for error is r of t minus c of t. तो r of t है हमारा, r of t is t times u of t. This is c of t. यहाँ से देखो r of t है t minus t plus t, तो t कट गया तो ये मेरा एरर आ गया. तो दिस इज द एरर सिग्नल. दिस इज द एरर सिग्नल. जब मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा. तो t, देयर इज द एरर सिग्नल. मतलब जब मैं रैंप इनपुट देता हूँ फॉर तो देयर इज द एरर. और कितना एरर रहता है, देयर इज द एरर ऑफ t, कैपिटल T. तो दिस इज अबाउट response, time response of first order system to unit ramp, to unit step or unit parabolic. Similarly, we can find the time response of a second order system or a unity feedback second order system. So time response of the second order control system, you can see a second order control system. Why it is called second order? When the order of the system is 2, it is called second order. So for a second order control system, वहाँ पे हमने 1 by ts plus 1 लिया था, लेकिन यहाँ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज 1 wherein the highest power of s in the denominator of its transfer function is equal to 2. Here we take a block diagram. यहाँ पे block diagram में g of s एकदम याद होना चाहिए. It is omega square by s into s plus 2 zeta omega, sorry s square plus s plus zeta omega n. और उसका ट्रांसफर फंक्शन, you all know the transfer function. This is the transfer function of second order system, omega square n by s square plus 2 zeta omega n s plus omega. This is the standard transfer function, and the denominator of the closed loop transfer function is called standard characteristic equation. 1 plus GHS is equals to 0. The standard characteristic equation of the second order system is s square plus 2 zeta omega n s plus omega square n. ये बहुत important terminology है, okay? Where omega n is called natural frequency of oscillation, zeta you all know is called damping ratio. Characteristic equation 1 plus GHS is s square plus 2 zeta omega n s plus omega square n. Okay. Since the highest power of s in characteristic equation is 2, the system represented in figure or in block diagram is called the second order system. Is called the second order system. ठीक है. तो कई बार डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज वन ऑफ द सेम थिंग. तो सिंस ऑर्डर ऑफ द सिस्टम 2 है तो मेरे को 2 रूट्स मिलेंगे. यहाँ पे 2 रूट्स मिलेंगे. S1 और S2 क्या रहेगा, एक रहेगा माइनस जीटा, इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac से, तो आई गॉट 2 रूट्स. एक रहेगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और सेकंड रहेगा माइनस ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सिंस the nature of roots किस पे डिपेंड है, the nature of roots depends on the value of damping ratio zeta and for a given omega n.
ठीक है, कि रूट्स आपके रियल है, कॉम्प्लेक्स है, ये किस पे वैल्यू डिपेंड है, जीटा, और जीटा किस पे डिपेंड है, ओमेगा एन पे। ठीक है, तो चेंज द नेचर ऑफ रूट्स विल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा फॉर अ गिवन ओमेगा एन। द फॉलोइंग केसेस आर ऑफ इम्पोर्टेंस, the following cases are of importance. So there are four cases that we have to see for a second order system depending on the value of zeta. If the value of zeta is 0, if the value of zeta is 0 and if I substitute the value of zeta here in this equation, so what will be the nature of roots? The nature of roots is imaginary, plus minus j, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ -1, और इट इज प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो इन दैट केस रूट्स क्या होंगे, रूट्स रहे इमेजिनरी, नॉन रिपीटेड है लेकिन इमेजिनरी है, और कहाँ पे लोकेट होंगे, दे लोकेट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो फॉर जीटा इज इक्वल्स टू 0, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स आर लोकेटेड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। एक रहेगा प्लस जे ओमेगा एन, एक रहेगा माइनस जे ओमेगा एन। जब ऐसा केस आएगा तो उसको बोलते हैं अनडैम्ड। The case corresponding to zeta is equals to 0 is called undamped, is called undamped system. The second, और उसको प्रैक्टिकल सिस्टम भी बोलते हैं, जनरली अंडर डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडर डैम में जीटा की वैल्यू रहेगी 0 से ज्यादा, 1 से कम, जनरली इट इज बिटवीन 0.2 to 0.8। Okay, so when we substitute the value of zeta between 0.2 to 0.8 in this equation, so we will got two roots, और वो roots क्या रहेंगे, वो roots रहते हैं complex conjugate, और वो complex conjugate रहेंगे and they lie in the left half of S plane, left में रहेंगे complex conjugate, this is called complex conjugate। और यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, इसको बोलते हैं ओमेगा डी, damped frequency of oscillation। You can see omega n into under root of 1 minus zeta. So in this value we can place, if I substitute in place of this omega n into under root of 1 minus zeta omega d, and omega d called damped frequency of oscillation। ठीक है, so for zeta between 0 and 1, the system is called under damped, that is the important system। और रूट्स कहाँ रहेंगे, द रूट, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट, द नेचर ऑफ रूट्स इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। सिमिलरली फॉर जीटा इज इक्वल्स टू 1, व्हेन द सिस्टम इज, व्हेन द जीटा इज 1, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है, दे लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, बट दे आर इक्वल, दे लाई ऑन द रियल एक्सिस, माइनस, दोनों रूट्स माइनस ओमेगा। इन दैट केस व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1, द सिस्टम इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। The system is called critically damped, and when zeta is greater than 1, तो रूट, दो रूट्स मिलेंगे, रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, in that case the roots are real and unequal, in that case the system is called overdamped system, the system is called overdamped। तो for zeta is equal to 0, system is called undamped। For zeta between 0 and 1, the system is called underdamped। For zeta is equal to 1, the system is called critically damped। For zeta greater than 1, the system is called overdamped। So this you have to keep it in mind, what is the value of, usually the feedback control system have the damping ratio in the range of about 0.2 to 0.8. Hence the feedback system generally exhibits an underdamped system. You can see. Then you know the, if I give the step input to the second order underdamped system, so we will got the response C of t is 1 minus e to the power minus zeta omega n into t by under root 1 minus zeta square sin omega dt plus phi, where phi is nothing but cos inverse of zeta, cos inverse of zeta। Okay, so you should know। So this is the response of second order system to unit step input, you should keep it in mind। The output response C of t is 1 minus e to the power minus zeta omega n into t by under root
1 minus zeta square sin omega dt plus phi, where phi is cos inverse of zeta. So this is the response of second order system to unit step input for underdamped system. Okay. Then there are some time response specification. You all know here. I take a second order underdamped system और उसको एक step input दिया, so this is the output. This is the output we got. This is the input one. So there are certain parameters or time response specification that will delay time. This is delay time is nothing but delay time is what? It is the time response to rise from 0% to 50% of its final value. Okay, this is a delay time TD. Similarly, rise time. This is rise time TR. Rise time is the time response for the response to reach 0 to 100% of its final value. So generally, for overdamped, it is 10% to 90%. For critically damped, it is 5% to 95%. So on. This is the rise time. And the formula for rise time is pi minus phi by omega d. ये सब डेरिवेशन आप लोग ने ऑलरेडी कर लिया होगा कंट्रोल सिस्टम पर. ओके. सिमिलरली पीक टाइम, दिस इज पीक टाइम. तो पीक टाइम का फॉर्मूला जानिए n pi by omega d है. ठीक है. तो this is first overshoot, first undershoot. तो n की वैल्यू for 1 it is n pi by omega d. For first under 2 and so on. So it is the time taken by the response to reach the maximum value, peak time. TP find करना है. Okay. Then also maximum overshoot को generally हम लोग percentage overshoot से भी define कर सकते थे. The maximum overshoot is the maximum peak value of the response curve measured from unity के ऊपर. मेरा input क्या था? मेरा input unity था और उसके ऊपर जितना भी output जाएगा that is called the overshoot. तो unity अगर input is unity उसके ऊपर जितना output जाएगा that is the overshoot. ठीक है. The maximum overshoot is the maximum peak value of the response curve measured from the unity. And if the final steady state value of the response differs from unity, then it is common to use the maximum percentage overshoot. In that case, we have to use the percentage. So formula for MP is C of T minus, that is output at peak time minus output at infinity or steady state. स्टेडी स्टेट पे तो 1 ही रहता है. यू कैन सी. तो जो भी वैल्यू आएगा -1 तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है. परसेंटेज ओवरशूट e टू द पावर माइनस जीटा इनटू पाई बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वी विल गेट परसेंटेज ओवरशूट. देन सेटलिंग टाइम जहाँ सिस्टम सेटल हो जाता है. सिस्टम यहाँ पे सेटल हो गया तो जनरली सेटलिंग टाइम इज जनरली 2% और 5% सेटलिंग टाइम वी विल कंसीडर. ठीक है. अगर अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड नहीं है तो यू हैव टू टेक 2% टॉलरेंस बैंड. तो टाइम टेकन टू सेटल एंड स्टे विदिन अ स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड इज कॉल्ड अ सेटलिंग टाइम. जनरली 2 to 5% हम लोग कंसीडर करते हैं. द फार्मूला फॉर सेटलिंग टाइम इज जनरली वी यूज अ 2% टॉलरेंस बैंड 4 by zeta omega है. अगर 5% के लिए बोला तो जस्ट 3 by zeta omega. और एज द zeta इंक्रीजेस राइज टाइम भी इंक्रीज होता है, पीक टाइम भी इंक्रीज होता है, लेकिन आपका जीटा सेटलिंग टाइम रिड्यूस होगा. ओके. पीक ओवरशूट डिक्रीज होगा. तो यू शुड कीप इट इन माइंड. ओके. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया है. सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय C of S by R of S. उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन था 25 by S square plus 6x plus 25. ओके. और फाइंड क्या करना था? राइज टाइम फाइंड करना था, पीक टाइम फाइंड करना था, पीक ओवरशूट फाइंड करना था, सेटलिंग टाइम फाइंड करना था, स्टेप यूनिट था. आल्सो वी हैव टू फाइंड द आउटपुट. तो मुझे मालूम है व्हाट इज स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम. इट इज s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा स्क्वायर n प्लस 0. तो इसके डिनोमिनेटर को सिस्टम के डिनोमिनेटर और को स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैंने कंपेयर किया तो मुझे ओमेगा n की वैल्यू 5 मिल जाएगी. 2 जीटा ओमेगा n यहाँ से मिल जाएगा 6. जीटा की वैल्यू मिल गई. जीटा लेस देन 1 है, 0 से ज्यादा है, मतलब अंडरडैम्प्ड है. सिस्टम अंडरडैम्प्ड है. तो फॉर्मूला मुझे मालूम है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीआर राइज टाइम? राइज टाइम का फॉर्मूला है पाई माइनस 5 बाय और थीटा बाय ओमेगा डी. थीटा इज नथिंग बट दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ जीटा. भी इससे फाइंड कर सकते हो.
ठीक है, अगर आप सेकंड में निकले हो तो उसको रेडियंस में फाइंड करो, ठीक है, तो ओमेगा डी निकल जाएगा, टी आर यूजिंग द फार्मूला पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी फार्मूला फाइंड करने, ओमेगा इनटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा डी निकल जाएगा। पीक टाइम का फार्मूला है पाई बाय ओमेगा डी, तो यू विल गेट द पीक टाइम। मैक्सिमम ओवरशूट का फार्मूला e टू द माइनस पाई इनटू जीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100, तो यू विल गेट द मैक्सिमम ओवरशूट इन परसेंटेज। सेटलिंग टाइम का फार्मूला है 4 बाय जीटा ओमेगा एन, तो विल गेट द सेटलिंग टाइम। और आउटपुट के लिए फार्मूला है, मुझे पता है ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और अंडर डैम्प सिस्टम है, और सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम के लिए मेरा आउटपुट था 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n इनटू t बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin ओमेगा dt प्लस phi और थीटा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई विल गेट द आंसर, दिस इज द आउटपुट रिस्पांस, सिंपल। ये फार्मूला कब लगेंगे, जब आपका स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज मैच विद द स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया है, एक ब्लॉक डायग्राम दिया था, व्हाट वी हैव टू फाइंड डैम्पिंग रेशियो फाइंड करना है, ओमेगा एन एंड एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। ये g ऑफ s है, फीडबैक इज 1, तो मैंने इसको ये फाइंड कर लिया। रिस्पांस सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया 20 बाय s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 24। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये है, ये दिस इज ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 24 नहीं है। अगर यहाँ पे 24 होता तो ये स्टैंडर्ड हो जाता। यहाँ पे नाउ दो ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा बाद, ओके। तो बाद में बनाता हूँ फॉर टू कैलकुलेट द टाइम रिस्पांस। तो पहले मैंने ओमेगा एन, दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ओमेगा स्क्वायर एन देखो यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। ओमेगा एन मिल गया, ओमेगा डी मिल गया, इसका मिल गया। तो यहाँ से मैंने बाकी तो फाइंड कर लिया था, लेकिन मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, डैम्पिंग भी फाइंड कर लिया। लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर बनाना है, यहाँ पे 24 लाना है न्यूमरेटर में। मैंने क्या किया, 24 को प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 24 कर दिया। तो देखो अब ये 20 बाय 24 अलग कर दिया मैंने इसको, अब मेरा ये इक्वेशन हो गया, 20 बाय 24 अलग हो गया, और 25/24 का मुझे इक्वेशन पता है, आई गॉट दिस ट्रांसफर। तो दिस इज द सिंपल टाइम रिस्पांस। नाउ फॉर टुडे हियर आई स्टॉप, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 4:35, so for this I stop. What is type of the system? ये भी थोड़ा बता दें। Type of the system is nothing but type of the system we can define. Type of the system is a number of poles of GSHS at origin. ठीक है, तो GS यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है, तो GSH जितने पोल ओरिजिन पे रहेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के नहीं, GSHS के, उसको बोलेंगे टाइप। अगर टाइप एक भी पोल ओरिजिन पे नहीं है तो वी कॉल इट टाइप 0, एक पोल है तो टाइप 1, दो पोल है तो टाइप 2, ठीक है। तो देयरफॉर टाइप ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS, दैट इज नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन ओपन लूप ट्रांसफर। तो दिस इज टाइप ऑफ द सिस्टम। तो हियर आई स्टॉप फॉर द टुडे। स्टेडी स्टेट एनालिसिस एरर हम लोग नेक्स्ट में करेंगे।